Here we are live now. Okay, we are live and we can work with this project. Open VS Code, and here you can see this is our module backend frontend. Done. Let's see first change the directory. Open terminal for first change directory for cafe and then cd backend to run backend server npm run dev. So backend server is running and database is connected perfectly. Done. Now open one more terminal, new terminal cd at terminal change directory cafe and again change directory to frontend npm run dev. Done. तो अभी हमारे ऐप में कुछ नहीं लिखा है, हमने ओनली ऐप लिखा है बस। ये ऐप आपको शो होगा और कुछ भी नहीं होगा एक्स्ट्रा में। डन है। तो इसको कर देंगे हम मिनिमाइज थोड़ा। ये हमारे बैकएंड साइड, यहाँ तो एरर नहीं आ रहा है। एक प्रॉब्लम थी जो कि हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर ली थी कि हमने कोड सेट नहीं किया था, तो आप कर लेना। जैसे कि अगर आपने पिछला पार्ट देखा होगा तो आपको यहाँ पे कोड सेट करना है, जिसकी वजह से हमारा एक एरर आ रहा था। अब नहीं आएगा। ओके, मूव होते हैं फ्रंट एंड में। इसको करेंगे हम हाइड। ये हमारा फ्रंट एंड के हमने फोल्डर्स क्रिएट कर लिए थे सभी चीज़ों के लिए। ओके, नाउ वन बाय वन हम सभी प्रोग्राम्स को, सभी फाइल्स को क्रिएट करेंगे। ओके, so start with app.jsx. App.jsx, here is it। और हमें CSS का भी सेटअप करना चाहिए। CSS हमें कौन सी यूज़ करनी है? सिंपल वाली जो कि हम करते आ रहे हैं। बट हमारी CSS फाइल बहुत बड़ी होगी, तो इसलिए मैं CSS आपको शेयर कर दूंगा, आपको जस्ट इंटीग्रेट कर देना है। डन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे app.jsx से। ओके, इतना पार्ट हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हमें क्रिएट करना है सबसे पहले फंक्शन का नाम होगा ऐप। वो इनसाइड दिस ऐप एंड डायरेक्टली वी विल यूज रिटर्न। एंड रिटर्न के अंदर सबसे पहले लेंगे क्या, एक डिव लेंगे। डिव, इसका क्लास होगा ऐप सेल। ऐप सेल, नॉट एफ सी, ऐप सेल, SELL। देन ऐप सेल के अंदर जाएंगे, इस डिव के अंदर जाएंगे। सबसे पहले क्रिएट करेंगे नैव बार। नैव बार, तो ऐसा करते हैं हम नैव बार ही क्रिएट कर लेते हैं ना सबसे पहले। वन बाय वन हम सभी चीज़ें क्रिएट करते जाएंगे, लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म डैशबोर्ड एंड ऑल। देन ऐसे ही करते हैं। राउट, राउटिंग भी करना है साथ में हमें। तो पहले यहाँ पे नैप बार इंपोर्ट करें, नैप बार क्रिएट कर लेंगे। एक नैप बार हमारी कहाँ पे क्रिएट होगी? कंपोनेंट्स के अंदर। कंपोनेंट्स के अंदर नैप बार क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्रिएट दी नैप बार, नैप बार डॉट JSX। तो ये हमारी होगी नैप बार डॉट JSX फाइल के अंदर हम अपनी नैप बार लेंगे। डन। और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं अपनी नैप बार। और उससे पहले हमें क्रिएट करना होगा ऑथ कॉन्टेक्स्ट और API।
ठीक है, तो वन बाय वन सभी चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो नेवर हमने क्रिएट कर लिया है, फाइल ओनली। और एपीआई में exios.js क्रिएट करेंगे। exios.js, ठीक है, exios.js का हम कोड लिखेंगे जिससे हमारा बैकएंड कनेक्ट हो जाएगा फ्रंट एंड से। इंपोर्ट करेंगे exios फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है, exios से, exios सेमीकोलन एंड const api equal to exios dot create, go inside this and create base url colon import dot meta dot env dot white underscore api underscore url, जो कि हमारा url होगा बैकएंड का, https नहीं कॉलन लोकल होस्ट कॉलन 5000 स्लैश एपीआई। डन। यूज करेंगे अगेन सेमीकोलन एपीआई डॉट इंटरसेप्टर इंटरसेप्टर डॉट रिक्वेस्ट ओनली रिक्वेस्ट डॉट यूज क्या करना है हमें, कॉन्फ़िगरेशन, go inside this and create token const token equal to inside local storage dot get item from cafe cafe token then semicolon if token then config dot headers dot authorization is equal to bearer at the rate, oh sorry, dollar token semicolon done and return कर देंगे return config then semicolon. This is our request for interceptor request. Then use api dot inter dot interceptors dot response dot use response arrow function response comma error arrow function go inside this and if error dot response question mark quaternary status इक्वल टू होना चाहिए हमारा 401 एरर लोकल होस्ट not local host local storage dot remove item from local storage of cafe item cafe not cafe token semicolon then again local storage dot remove item from cafe user then if not window dot local location dot path name dot starts with slash login go inside this and window dot location not lo- local storage use location dot href is equal to slash login जो हमारा राउट होगा उसके अंदर आएगा। डन। देन नेक्स्ट रिटर्न करेंगे रिटर्न promise return a promise dot reject as error semicolon done। so this is our xios export करेंगे default API semicolon। This is our API for connect frontend backend with frontend intercept dot request dot user config
const token equal to local storage get item from cafe token, and config, then interceptor dot response dot use. We will use response equal to response arrow function, error is arrow function. Then if error dot response dot status is 401, then local storage remove item cafe token and remove item from cafe user too. If not, window dot location path name dot starts with slash login, window dot location dot href is equal to हो जाएगा हमारा slash login. Then return कर देंगे promise dot reject error. Done. The API is exported. Minimize this. After that, create context for auth context. The context is auth context dot jsx. Hi, auth context dot jsx, and write our context. So here const auth context equal to लेंगे create context that is null semicolon by default, and export करेंगे const auth provider equal to children children is the auth provider. So inside this, and use const use state for user and loading. So user initialize user set user equal to use state for null, and const use location comma set location not location, we need loading loading comma set loading. Done. Equal to use state initialize with true. Done. Now use effect. So inside this arrow function, or inside this use effect, const stored equal to local storage dot get item from cafe user semicolon, const token equal to local storage dot get item from cafe token. Then if stored and stored and token, then set user as json dot parse stored set loading false semicolon array empty array. To store this use effect, then const for login context async email comma password email comma, अरे ये ऑटो अपडेट क्यों हो रहा है यार, email comma password. यूज एरो फंक्शन को इनसाइड दिस डबल इक्वल यूज कर लिया हमने एरो में, तो रिमूव करेंगे इसे. const data equal to await api dot post for login slash auth slash login api comma email, and password is our entities to login. Done. Then store in local storage dot set item as cafe token comma data dot token semicolon, and local storage dot set item as
cafe user comma json dot stringify data dot user semicolon and set user as data dot user semicolon and return data dot user semicolon and const register equal to async payload arrow function go inside this and use const data equal to await api dot post slash auth slash register comma payload semicolon local storage dot set item as cafe token comma data dot token semicolon and local storage dot set item as cafe user comma json dot stringify as data dot user and set user as data dot user semicolon then return data dot user semicolon done. After that again use semicolon for const log out arrow function and again equal arrow function this one for logout. So here we go for logout as local storage dot remove item as from cafe token and local storage again dot remove item from cafe user underscore user डन और सेट यूजर कर देंगे नल पहले हमने सेट यूजर क्या किया था डेटा डॉट यूजर जो हम डेटा ऐड करेंगे उसमें डेटा डॉट यूजर रिटर्न कर देंगे डेटा डॉट यूजर बट यहाँ पे हमें कर देना है नल क्योंकि हमें ये लॉग आउट करना है इसलिए नल यूज करेंगे तो हमारे डेटा में कुछ भी नहीं आएगा रिटर्न कर देगा auth context auth context dot provider auth context dot provider इसको हम ऐसा करेंगे एक टैग क्रिएट करेंगे प्रोवाइडर auth context dot provider वैल्यू क्या लेंगे इसका वैल्यू लेंगे यूजर कॉमा लोडिंग कॉमा लॉगिन कॉमा रजिस्टर कॉमा लॉग आउट then these are the values for this auth context or the value is children as a children then semicolon export करेंगे const use auth arrow function तो use context use context as auth context semicolon as auth context create context तो import यहाँ पे हुआ है only use context हमें import क्या क्या करना था create context use effect hook and use state hook also so these are our four hooks for that then import करेंगे API from कहाँ से API हमने कहाँ पे क्रिएट किए है XIOS में क्योंकि हमारे API नाम के फोल्डर में API/XIOS done then use semicolon so this is our auth context you can see this is our auth context now move to navbar
Where is navbar? navbar, इससे पहले हम मैन में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे अपना राउटिंग, क्योंकि ऑथ कॉन्टेक्स्ट हमने प्रोवाइड किया है। तो करेंगे हम यहाँ से रिमूव और इंपोर्ट करेंगे ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ये होगा हमारा रिएक्ट डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट, अरे यार टैग क्रिएट हो रही है। स्ट्रिक्ट मोड को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। इंपोर्ट करेंगे पहले नंबर तो रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट करेंगे द नेक्स्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, रिएक्ट डोम स्लैश क्लाइंट, और इंपोर्ट करेंगे नेक्स्ट होगा हमारा ब्राउज़र राउटर, ब्राउज़र राउटर का यूज़ करेंगे फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम। ऐप डॉट जे एस एक्स हमारा इंपोर्ट है और प्रोवाइडर इंपोर्ट करेंगे, तो हम कर देंगे यहाँ से रिमूव। हम लेंगे इंपोर्ट और प्रोवाइडर फ्रॉम डॉट कॉन्टेक्ट स्लैश auth context dot jsx done. These are imported. Now move to right, move right here and use react dot strict mode. Go inside this and use browser router, and inside browser router create auth provider. Inside auth provider we will use app slash with protected route. Done. Navbar, create our nav, check करेंगे navbar is working or not. Fail to resolve import react dom, dom करना था don कर दिया हमने। Okay, there is no issue right now, but nothing is visible. app.jsx app shell, app shell को नहीं किया हमने एक्सपोर्ट, तो इसको करेंगे हम एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करेंगे एज डिफॉल्ट एफ सेमीकोलन। there is nothing visible because of this is inside app shell,
this as well, and let me check. Okay, navbar is not imported right here. Import navbar, import navbar, navbar from slash component slash navbar. Done. Check for browser. Now navbar is visible for you. Done. Now move to navbar and write our navbar program. और navbar के पहले हम लॉगिन रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर लें अगर तो पहले हम ऐसा करेंगे, navbar ही क्रिएट कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। Remove this div and create const user comma logout for arrow function use auth context, use auth context and const navigation या navigate equal to use navigate. Done. And const handle log out arrow function, go inside this and remove this p, log out semicolon and navigate as slash login. Done. So this is the way to get that as login or logout, and use navigate and import one more thing, that is a link we will use in it. So link and auth context, use auth from auth context. So import that. Done. And inside this return statement we will use header class name as navbar, navbar. Go inside this header and now create link, that is 2 equal to slash route and class name equal to navbar underscore brand, and use span class name is navbar mark. Done. And mark is t cup. Mm, yes, use this one, and this belongs to link. Done. After that use one more span as roast and amp semicolon leader, yeah, ledger. Is this visible? Yes. Then after this link did one more thing, that is user and go inside this and create nav with class name is navbar underscore links. Go inside this and create link, that is to link करेंगे slash route
राउट हम अभी नहीं लेंगे, कुछ भी राउट एम्प्टी रखेंगे इसको। और इसको भी हम ऐसा करेंगे, अभी एम्प्टी रखेंगे, कोई भी राउट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, नहीं तो ये हमें एरर थ्रो कर देगा। डैशबोर्ड, और हमें कुछ और राउट क्रिएट करने, पाथ क्रिएट करने हैं फॉर डैशबोर्ड के बाद न्यू ऑर्डर के साथ में ऑर्डर्स एंड मेन्यू। तो इनके नेम हम चेंज करेंगे, न्यू ऑर्डर और ऑर्डर्स, और इसका राउट होगा हमारा मेन्यू। देन यूजर डॉट रोल इज इक्वल टू एडमिन एंड क्रिएट लिंक टैग टू अलाइन टू, टू के अंदर क्या लेंगे हम, इनसाइड डबल कोट स्लैश राउट फॉर टेबल्स। तो अभी हम टेबल्स का राउट ऐड नहीं करेंगे, इसको भी एम्प्टी छोड़ देंगे, नैव के अंदर क्लोज दिस, और लिंक के अंदर लेंगे टेबल्स। ठीक है, तो ये हम राउट बाद में कनेक्ट करेंगे, तो हम ये क्रिएट कर लेंगे। डन। नाउ क्रिएट वन मोर div as navbar user. Go inside this div and create user ternary parenthesis empty div, and inside this div create span span tag with class name, not this, navbar underscore who. Go inside this span and return user dot name, और साथ में हम रिटर्न करेंगे em dot user dot role। डन। और क्रिएट करेंगे बटन विथ क्लास नेम बटन, बटन हाइफन हाइफन घोस्ट, ऑन क्लिक बटन टू हैंडल लॉग आउट। डन। एंड राइट साइन आउट एज पर दी बटन। डन। यूजर ब्रैकेट एंड यूज करेंगे इन दिस टर्नरी टू रिटर्न एज कॉलन and one more div empty div closing tag for this empty div। एरर क्यों थ्रो कर रहा है, क्योंकि हमने पैरेंथेसिस की जगह पे यूज कर लिया करली ब्रैकेट, पैरेंथेसिस यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, go inside this div empty div and create a link with class name as button goes to equal to login। तो राउट में इसको भी हम ऐड नहीं करेंगे, बाद में ऐड करेंगे। वो लॉगिन लिंक के अंदर जाएंगे और इसके अंदर लेंगे साइन इन। डन। then again open link with class name, link class name as button hyphen primary button, then to इक्वल टू लेंगे स्लैश राउट। तो राउट करेंगे हम रजिस्टर के लिए, बट अभी हम ऐड नहीं कर रहे हैं राउट। जब हम रजिस्टर क्रिएट कर लेंगे फाइल, देन हम राउट क्रिएट करेंगे गेट स्टार्टेड फॉर रजिस्टर। डन।
header. Now let's see the output. Here, refresh this, sign in, and get started. I think let's provide CSS for this. तो CSS हमारी होनी वाली है बहुत बड़ी। तो CSS के लिए क्या उपाय करें हम? हाँ, CSS हम डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं इसमें। फिर मैं CSS का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, या गिटहब का लिंक, जिससे आप CSS ऐड कर सकें इसमें। ठीक है, या तो मैं CSS पूरी की पूरी अपलोड कर दूंगा कहीं पे, जो आपको अवेल हो जाएगी। हम्म, तो हाउ टू शेयर दैट? Wait guys, we will continue with CSS. Open Canva, and here I am going to add that. So this is our CSS. Let's copy from here. This is not visible for you, I know that. Just manage and add it right here inside this CSS. What's wrong with this? What is this? Remove this again. I think we should use that in a different way. Hidden. तो ये आज की हमारी CSS सेव। तो ये ऑलरेडी इन यूज है। Move to browser, and here you can see the CSS is added for navbar. Then you can see our navbar, but any route is not available. Sign in button is also not available. Why, I don't know. Done. और ऐसा करें, एक बार हम राउट चेक करके देख लें एक बार। स्लैश डैशबोर्ड एरर तो करता है कि नहीं? डैशबोर्ड, वैसे तो एरर शो नहीं हो रहा है। तो हम सारे राउट ऐड कर लें क्या, या अभी ना करें?
and never route. First, this is only slash route. Dashboard ये होगा हमारा orders slash new, ये होगा slash orders, और ये होगा slash menu। के अंदर रिटर्न कराएंगे हम अपना टेबल स्लैश टेबल्स। टेबल्स का टी हमारा स्मॉल होगा। टेबल्स राउट and sign in and sign out route inside this two would sign in slash login and use inside this as register slash register. Then go back to VS Code, not VS Code on the browser. Is there anything visible? Okay, no problem with that. Forget about all of that things. Now move to pages. Inside this page, create login.jsx and register.jsx. Create login.jsx, write your login page const login equal to arrow function to return const login equal to use auth use auth को import कर लेंगे and const navigate navigate equal to use navigate भी import हो जाएगा हमारा semicolon then const form set form equal to use state as email colon empty quad for store email and password restore password empty quads. Done. So this is for form. Then const use error to receive error comma set error equal to use state empty string for initialization phase. This is as empty. Then submitting comma set submitting meeting. Yes, is it correct? Yes. Equal to use state as false semicolon. Then use const handle submit equal to async e arrow function go inside this e dot prevent prevent default। ये क्लास क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि हमने डॉट लगाया इसलिए। सेट करेंगे एरर को एज एम्प्टी एट द इनिशियलाइजेशन फेज टू हैंडल सबमिट सेट सबमिट या सेल्फ सबमिटिंग एज ट्रू ट्राई await for login form dot email comma form dot password semicolon navigate as slash dashboard when we log in. Done. The login the if the login is done, we'll navigate to the dashboard. Then catch error set error as error dot response response
डॉट डेटा डॉट मैसेज और could could not sign in and check your details. And finally, return as said submitting as false semicolon and return as first create a div inside this return as auth page. Why it is not created div? Create with class name as auth page. Go inside this and create one more div with auth card. Again go inside and create a span with class name I draw. इसके अंदर लेंगे front of your house और h1 लेंगे welcome back when you log in. Paragraph with class name auth serve as sign in to run the floor or manage the counter and return error and creative alert create नहीं हो रहा है only div create करेंगे div class name as alert alert hyphen error. Close this div and create error slash div and create form on submit handle submit as class name equal to form. Close this form tag and go inside this form tag. So first label inside this form. Remove this HTML4. Only use this label single tab. Email. Then input box create करेंगे as type लेंगे email और this is required लेंगे with value लेंगे form dot email is the value of this input on change e equal to set form comma email colon e dot target dot value. Done. और साथ में ऐसा करेंगे प्लेस होल्डर भी लेंगे इसके तो हमें क्या लेना है और प्लेस होल्डर जो कि होगा हमारा एंटर योर यू एट द रेट रोस्टैंड लेजर कुछ भी लेजर रोस्टैंड डॉट कैफे फॉर एग्जाम्पल देन क्लोज दिस लेबल ये एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट हमारा कहाँ का घूम रहा है यहाँ पे देन एक और लेवल क्रिएट करेंगे फॉर पासवर्ड ऐसा करेंगे इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे लेंगे पासवर्ड इनसाइड दिस लेवल एज पासवर्ड इनपुट का टाइप क्या होगा पासवर्ड और रिक्वायर्ड ले लेंगे रिक्वायर्ड ही होगा हमारा
then form.password on chess e set form ईमेल की जगह पे लेंगे password.e.target.value फ्रॉम प्लेस होल्डर में जस्ट हम ऐसा करेंगे, सिंपल रख देंगे इसे। इमोजीज में से हमारा डॉट 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 निकल आएगा, डॉट। यहाँ पे कोई डॉट का साइन है इसमें। पासवर्ड इंक्रिप्शन के लिए हमें डॉट डॉट में कुछ तो दिखना चाहिए। क्या ऐड कर सकते हैं हम? वैसे हमारे डॉट का शॉर्टकट की भी तो होगा कुछ डॉट निकालने का, पर देख लेंगे। बुलेट आइकन शॉर्टकट की। शॉर्टकट की क्या है हमारी इसकी? बुलेट आइकन की कल Alt+7। Alt+7 से आ जाएगा, या होल्ड करना है हमें विंडोज में ऑल्ट प्लस टाइप 0149 0149 ऑल्ट 0149 यूज दैट ऑल्ट 0149 yes, a dot is available right now and remove this। और इसको कर लेंगे हम कॉपी। कितने बार? 5-6 बार कर लेंगे कॉपी। कौन राइट करेगा यार इतना। डन। तो हमारा इनपुट बॉक्स कंप्लीट हो गया, ये लेवल कंप्लीट है। अब लेवल के बाद हम क्रिएट करेंगे एक बटन, तो सबमिट बटन। बटन क्रिएट करना तो रिक्वायर्ड ही है। बटन जिसके अंदर लेंगे क्लास नेम एज बटन btn बटन हाइफन हाइफन प्राइमरी बटन हाइफन हाइफन फुल एज डिसेबल्ड इक्वल टू लेंगे सबमिट या सबमिटिंग एंड inside this curly bracket use submitting curly bracket as sign signing in colon sign in। Paragraph with class name auth switch new to the team। ऐड करेंगे लिंक with to equal to plus register और create an account। Done। So this is our login page। इसको करेंगे export default as login semicolon। लॉगिन हमने मैप कर रखा है यहाँ पे। हम जाएंगे app.jsx में, यहाँ पे यूज करके देखेंगे अपना लॉगिन। लॉगिन को कैसे यूज करेंगे? जस्ट आपको app.jsx में पहले इंपोर्ट करना होगा लॉगिन। डायरेक्ट यहाँ पे सिंपली इसको हाइड कर देते हैं, पहले कमेंट आउट कर देंगे और यहाँ पे लेंगे अपना सिंपल लॉगिन लॉगिन प्लस, फिर हम प्रोटेक्टेड राउट वगैरह यूज करेंगे। अभी सिंपली को इंपोर्ट कर लेंगे और लॉगिन हमारा कहाँ से आएगा? सॉरी, ये यूनाइटेड फाइल कहाँ से आ रही है? लॉगिन इंपोर्ट ना हो रहा है,
लॉगिन हो जाएगा, इंपोर्ट, डन। अब चेक करेंगे हम अपना ब्राउजर, रिफ्रेश दिस, इज लॉगिन अवेलेबल, नो, लॉगिन हमें शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये प्रोटेक्टेड राउट के अंदर है, आई थिंक सो, इसीलिए। इंपोर्ट तो हो गया है हमारा, तो ये हमारा डैशबोर्ड के अंदर शो होगा, इसलिए अभी शो नहीं हो रहा है। डन। तो इसको करेंगे हम यहाँ से अभी रिमूव, ओनली नैप बार को ही शो करेंगे, स्लैश। अब क्रिएट करेंगे हम अपना रजिस्टर, रजिस्टर डॉट जेएसएक्स, डन। रजिस्टर डॉट जेएसएक्स, and here const register arrow function, go inside this and use const register as equal to use auth सेमीकोलन, use auth को इंपोर्ट कर लेंगे, डन। देन const navigate equal to use navigate, imported that, and const form comma set form, use state as name, empty string, email colon empty string, comma password colon empty string, then const error comma set error equal to use state empty string, and const submitting comma set submitting. What wrong with this? Just use state as false. Done. Now use const handle submit, or handle submit, हैंडल सबमिट के लिए हम ऐसा करेंगे, लॉगिन से इसको कॉपी कर लेंगे, हैंडल सबमिट को पिछले कॉपी करेंगे हैंडल सबमिट, और रजिस्टर के हैंडल सबमिट में यहाँ पर ऐड कर देंगे, पेस्ट करेंगे, हैंडल सबमिट इक्वल टू आसिंग की प्रिवेंटिव फॉर सैम 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 ऑल थिंग्स आर सैम। जस्ट हमें थोड़ा सा यूज करना है, यहाँ पे लॉगिन की जगह करना है रजिस्टर, रजिस्टर फ्रॉम, यहाँ पे करेंगे फॉर्म ओनली क्योंकि मल्टीपल एंटिटीज होंगी। नेविगेट कर देंगे डैशबोर्ड को, कैच एरर, सेट एरर, एरर डॉट रिस्पॉन्स, डेटा डॉट पुट नॉट क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट योर अकाउंट, देन और फाइनली में कर देंगे फॉल्स, रिटर्न सेमीकोलन। और इसके अंदर जाएंगे, एक लेंगे रिटर्न, रिटर्न में जाएंगे और पेज फॉर्म ईमेल एवरीथिंग। तो ऐसा करेंगे हम, सेम वे यूज करेंगे, हम यूज करेंगे क्या, अपना लॉगिन, लॉगिन का रिटर्न के अंदर जाएंगे, रिटर्न स्टेटमेंट को करेंगे कॉपी, और रजिस्टर के रिटर्न की जगह पे ऐड कर देंगे, डन। बस हमें थोड़े से कुछ चेंजेस करना है, ऑथ पेज ही रहेगा, ऑथ कार्ड ही रहेगा, और ये भी आई ब्रो ही रहेगा, फ्रंट ऑफ हाउस वेलकम बैक की जगह यूज करेंगे हम ज्वाइन द टीम, ज्वाइन द टीम, डन। और ऑटो सर्व, ऑथ सर्व रिमूव करेंगे इसे,
की जगह यूज करेंगे द फर्स्ट अकाउंट क्रिएटेड रन्स द शॉप एज एडमिन। तो द फर्स्ट अकाउंट क्रिएटेड रन्स द शॉप एज एडमिन, everyone after that is treated as पैराग्राफ। हमारा क्या हुआ पैराग्राफ भैया को प्लेस that joins as staff, so except all will be staff, the first one will be admin. Done. Error type class name alert alert error error done. Handle submit error form label। तो पहला लेवल हम करेंगे चेंज को करेंगे अपर साइड, और नेम चेंज करेंगे इसका, ईमेल की जगह लेंगे फुल नेम, और टाइप हो जाएगा हमारा टेक्स्ट टेक्स्ट, है ना। और रिक्वायर्ड ले लेंगे, वैल्यू लेंगे फॉर्म डॉट नेम, और ऑन चेंज की जगह पे यूज करेंगे सेट फॉर्म। लॉगिन में हमने क्या यूज किया था, ऑन चेंज, है ना। बट हमें तो ऑन चेंज की जगह सेट फॉर्म करना था ना। ऑन चेंज सेट फॉर्म, और ऑन चेंज सेट फॉर्म एज ईमेल, ईमेल की जगह पे लेंगे हम नेम, है ना। फर्स्ट एंटिटी के लिए तो नेम ही लेंगे, और सेकेंड एंटिटी हमारा होगा ईमेल, नेम टारगेट डॉट वैल्यू प्लेस होल्डर में लेंगे नेम, एक नेम ले लेंगे कोई किसी का भी रैंडमली, जैसे कि हम कॉमनली लेते हैं जॉन डो, जॉन डो, तो जॉन डो ही ले लेंगे। और ईमेल हमारा सेम ही रहेगा, रिक्वायर्ड फॉल्स सब सही। ओके डन, ऑल थिंग्स आर परफेक्ट। डन, बस हमें चेंज करना है थोड़ा बटन में, बटन को थोड़ा चेंज करेंगे। ओके, बटन, बटन प्राइमरी फुल डिसेबल्ड सबमिटिंग, सबमिटिंग यहाँ पे लिखेंगे बस, क्रिएटिंग अकाउंट, और लिख देंगे क्रिएट अकाउंट। ये हो गया हमारा बटन। Done. So this is all over our register. Export default as register semicolon। okay, इसको भी हम app.js में जस्ट इंपोर्ट कर लेंगे, बट हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम इसको इंपोर्ट करेंगे अपने
डैशबोर्ड में, इसके अंदर हमारा लॉगिन रजिस्ट्रेशन सभी चीज़ें शो होंगी। क्रिएट द डैशबोर्ड, डैशबोर्ड डॉट JSX। डैशबोर्ड कैसे क्रिएट होगा? कॉन्स्ट डैशबोर्ड इक्वल टू arrow function, go inside this and use const user equal to use auth semicolon and const stats comma set stats arrow function sorry equal use state यूज करेंगे इसके लिए, क्योंकि होगा null initialize with set stat null and const active, एक्टिव लेंगे set active को भी हम empty रख लेंगे, set active equal to use state as empty array to check activity, const loading comma set loading equal to use state true semicolon. Okay, true use effect parenthesis arrow function, go inside this and use const load equal to async use try and catch block const stats response order result order result equal to await promise dot all API dot get slash orders slash stats slash summary API dot get slash orders comma params colon status is pending comma then use then set करेंगे stats as stats response dot data semicolon set active orders dot orders response dot data dot orders dot slice as 0 comma 4 semicolon then use finally return set loading as false and load comma empty array and const cards equal to stats ternary to use level colon active orders and comma value is stats dot active
count, done। इनको कर लेंगे हम कॉपी फॉर 4 टाइम to return orders of today and paid today and revenue of today। तो इसकी जगह पे यूज करेंगे एक्टिव की जगह orders today, like orders today, paid today, और लेंगे revenue today। यहाँ पे लेंगे stats paid today count today orders active count today orders paid today count, और वैल्यू क्या लेंगे backtick dollar stats dot revenue today dot to fixed as 2, then रुपए का साइन लेंगे हम्म, रुपए का सिंबल क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे, दिखना चाहिए। डन। इस वन फॉर रिवेन्यू, देन कॉलन में रिटर्न कर देंगे एम्प्टी अरे। नाउ मूव टू मैन as return, create a div page, inside this page header div, एक और div create करेंगे page header, create a div empty div with span class name as I row, and the user dot role is equal to admin to return the admin, otherwise the manager managers view, colon today shift को डबल क्वाट से क्लोज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे for the admin, done। After that create a s1 tag, morning, user dot name dot split order slash new class name equal to button hyphen primary, new order, done। Loading paragraph के अंदर लेंगे viewing your numbers,
done, or colon after terminary parenthesis to return empty div. Go inside this div and create a one more div that is stat grid class stat grid and return cards.map as C arrow function parenthesis to return a stat card div class name stat card key equal to C dot label. Close this div. Here is closing tag. Create span with class name stat card value C dot value. Done. Then create one more span stat card label the C dot value. C dot value की जगह लेंगे C dot label. Done. Now create one more stat dot top items dot length is greater than 0 and parenthesis create a div detail card. डिटेल कार्ड के अंदर लेंगे डिटेल कार्ड हाइफन हाइफन चौक S3 टैग लेंगे for today's best seller OL with class name best seller list link with key t dot id span t dot underscore id span t dot quantity quantity sold. Done. तो हमें एक स्टेट कार्ड भी क्रिएट करना था देन बेस्ट सेलर यूज करते हैं हम तो इसको ऐसा करते हैं अभी कॉपी कर लेते हैं और रिमूव कर देंगे यहाँ पे लेंगे एक stats dot top item dot map t arrow function parenthesis go inside this and add that right here. Done. Now next section head section head h2 spending ticket. Done. Then link to orders view all orders active dot length equal to 0 div
empty state paragraph with no pending tickets right now hyphen hyphen the floor is caught caught up link as per 2 slash order slash new with class name equal to button hyphen hyphen primary, and inside this link add ring up an order. Then after this binary operator, use colon for this parenthesis, create received grid active dot map o arrow function and order card key equal to o dot underscore id orders equal to 0 means o लेंगे 0 नहीं parent backslash close this hidden to map the active received grid. Now close this div and here you can close this export default as dashboard. Done. अब जाएंगे हम app.jsx में और हमें प्रोटेक्टेड राउट भी क्रिएट करना है, तो कंपोनेंट्स के अंदर क्रिएट करेंगे एक फाइल जिसका नाम होगा प्रोटेक्टेड राउट डॉट जेएसएक्स। मैंने कुछ नाम रॉन्ग कर दिया, हाँ रीनेम करेंगे, जेएसएक्स करना है, प्रोटेक्टेड राउट, यस, कॉन्स्ट प्रोटेक्टेड राउट इक्वल टू लेंगे चिल्ड्रन कॉमा एडमिन ओनली equal to false, arrow function go inside this and const user comma loading equal to use auth semicolon. If loading, then return a div with class name page loader and the warming of the espresso machine. Done. Then if not user, then return a navigate navigate to login as replace slash semicolon. If admin only, then add user dot role not equal to admin and return navigate to the dashboard equal to slash dashboard। डैशबोर्ड के लिए कोई सजेशन नहीं आ रहा है, रिप्लेस स्लैश सेमीकोलन।
रिटर्न चिल्ड्रन सेमीकोलन। डन। इसको कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एज प्रोटेक्टेड राउट। डन। डन। अब जाएंगे हम ऐप डॉट जेएस में के अंदर। लॉगिन भी हमने इंपोर्ट कर लिया है, रजिस्टर करेंगे इंपोर्ट, ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। नैप बार के अंदर क्रिएट करेंगे एक मैन टैग। मैन के अंदर लेंगे राउट, और राउट के अंदर पाथ सेट करेंगे सबसे पहले किसका, पाथ इक्वल टू स्लैश एलिमेंट इक्वल टू navigate to the dashboard and replace। डन। राउट का आप चाहें तो क्लोजिंग टैग यहीं लगा सकते हैं, अदर भी क्लोजिंग टैग लगा सकते हैं अलग से भी। ऐसा करेंगे हम, इसका क्लोजिंग टैग नहीं लगाएंगे, अलग से लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट इसको कर देंगे हम क्लोज, यहीं पे ही लगा भी दी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा। बस यहाँ पे नेविगेट नेविगेट करेंगे स्लैश के बाद लॉगिन, ये जाएगा हमारा स्लैश लॉगिन के अंदर, लॉगिन एलिमेंट, और कोई नेविगेट नहीं करना है हमें। सिंपल यूज करेंगे लॉगिन स्लैश। डन। इसी की तरह से यहाँ पे भी करेंगे यूज। रजिस्टर, और स्लैश में राउट लगाएंगे रजिस्टर। देन मैप करेंगे हम अपना डैशबोर्ड इस तरह से, यूज करेंगे राउट। राउट का हम क्लोजिंग टैग नहीं लगाएंगे। पाथ लेंगे इक्वल टू स्लैश डैशबोर्ड एलिमेंट इक्वल टू, एलिमेंट क्या लेंगे हम, प्रोटेक्टेड राउट। और इसके अंदर लेंगे अपना डैशबोर्ड। डन। और ये राउट हमें क्रिएट करने थे राउट्स के अंदर यार, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। राउट, इन राउट के अंदर रखेंगे इन राउट को। डन। कुछ इस तरह से आपको मैनेज कर लेना है। डन। एक और राउट सेट करेंगे।
जो कि होगा हमारा पाथ इक्वल टू एस्ट्रेस एलिमेंट इक्वल टू नेविगेट टू स्लैश डैशबोर्ड रिप्लेस। नेविगेट को करेंगे क्लोज। देन let's check the outcome. Why nothing is visible? Protected route register. नेविगेट में हमने इंपोर्ट नहीं किया है राउट राउट कॉमा राउट। ये राउटिंग हमारी वर्क ही नहीं कर रही है। अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा है। नैव बार कंपोनेंट लॉगिन रजिस्टर प्रोटेक्टेड राउट ऑर्डर डिटेल ऑर्डर वगैरह मेन्यू ऑर्डर कुछ भी नहीं किया है। टेबल भी नहीं। मेन्यू नहीं। कि डैशबोर्ड में प्रॉब्लम है हमारे। डैशबोर्ड को चेक करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ भी अभी इंपोर्ट नहीं किया है ना हो नहीं। इंपोर्ट करेंगे react कॉमा यूज स्टेट हुक यूज स्टेट और यूज इफेक्ट फ्रॉम react और इंपोर्ट करेंगे लिंक फ्रॉम react router DOM और इंपोर्ट करना है API फ्रॉम API स्लैश API स्लैश XUS XIOS कुछ भी पढ़ लो इसको। एंड इंपोर्ट करेंगे यूज auth फ्रॉम context स्लैश auth context। इंपोर्ट करेंगे ऑर्डर कार्ड। ऑर्डर कार्ड तो अवेलेबल नहीं होगा, ये एरर थ्रो ना करे। कंपोनेंट स्लैश ऑर्डर कार्ड। तो इसके लिए ऐसा करेंगे एक ऑर्डर कार्ड यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर क्रिएट कर लेंगे। ऑर्डर कार्ड डॉट JSX और RAFC कर देंगे। डन। इससे एरर थ्रो ना करे। डैशबोर्ड में वापस आएंगे। डन। भगवान कुछ तो शो कर देना यहाँ। कुछ तो शो कर दिया है। ओके क्योंकि हमने 3 डॉट्स लगा दिए हैं API के पहले। डबल डॉट्स आएंगे मैप करने के लिए। नथिंग इज विजिबल।
थोड़ा हम चेंज करने वाले इसमें, क्योंकि हमारा डैशबोर्ड एस स्लैश है, तो इसको करेंगे हम रजिस्टर। डन। चेक करते हैं, इज रजिस्टर इज विजिबल और नॉट। नो, नथिंग इज विजिबल। दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक रिएक्ट। टर्मिनल्स ओपन करके देखते हैं, हमारा या तो डेटाबेस डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया, कनेक्टेड है। चेक कर लेंगे एक बार फ्रंट एंड बैक एंड को भी। हाँ, क्योंकि डेटाबेस हमारा कनेक्टेड है ही नहीं। MongoDB को फिर से कनेक्ट करेंगे, डिलीट। इंटरनेट नहीं चल रहा यार। ओके, कंफर्म दिस अगेन। दिस इज इन फाइंडिंग। वेट। पता है, ये लास्ट लास्ट टाइम में जब हमारा सब चीज़ें वर्क करने लगती हैं तो ये एरर थ्रो करने लगता है, वो भी डेटाबेस जैसी बेकार प्रॉब्लम के लिए। अभी मैं स्ट्रीम बंद करूंगा ना, तुरंत ये चल जाएगा। डेटाबेस इज कनेक्टेड। लेट्स चेक फ्रंट एंड। इसको करेंगे एक बार टर्मिनेट, cls npm run dev। फ्रंट एंड को फिर से रन करेंगे। कुछ भी शो नहीं हो रहा है, बस ये क्या प्रॉब्लम है भैया। Backend is working perfectly. I think something wrong in this front end program.
is also the mistake we have done. Import React from React. अरे पैरेंथेसिस क्यों यूज किया है यार। एरर रिमूव हो जाएगा। अभी भी हमें कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने चिल्ड्रन ढंग से नहीं लिया है। Hmm. So this login order card does load. I think nothing is wrong in it. Why this is not working perfectly? Auth provider, auth context,
Auth context provider as children. Auth context dot provider value user loading login register logout as of now in children. यूज navigate यूज auth और इसमें हमें लिंक करना है यूज करना लिंक और रिक्वायर रिक्वायर क्यों किया हमने यार इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले react from use state from react टाइप हमारा क्योंकि मॉड्यूल है लिंक यूज navigate from react router dom import use auth from slash context slash auth context semicolon done then for रजिस्टर के लिए भी यही चीज़ें हम पहले इंपोर्ट करेंगे ओके रिएक्ट के साथ में एक हुक भी इंस्टॉल करना है यूज स्टेट हुक use auth then context auth context that was the problem and in dashboard we imported all things are perfectly oh finally the login form is visible for register now we can register and let's check it is going to the database or not name zone do right now this is a name email zone 123 at the rate gmail.com and password zone 1234 registration failed why
Let's see. Where is register? This is our register. Here, register, use auth, navigate, return from platform, use state, name, empty email, password, set error, use state, submitting, set submitting, use state false, handle submit, done async e dot prevent default, set error, set submitting, try and catch block for register form, slash dashboard, response.data.message could not create your account, and auth phase, auth card, and form is on submit, handle submit, class form, full name, टाइप यहाँ से रिमूव करके देखें नेम का कि required form dot name equal to set form e dot target value button btn primary button full disabled submitting submitting creating account create account auth switch we press this again as monu जहाँ monu @gmail.com monu m जहाँ 1234 क्रिएट अकाउंट रजिस्टर फाइल रजिस्ट्रेशन फाइल हो रहा है हमारा क्यों और कॉन्टेक्स्ट में चेक करेंगे for register the payload will handle async payload const data equal to await api.post/host/register payload local storage dot set item as cafe token data dot token local storage dot set item as cafe user json stringify data dot user set user as data dot user and return data dot user done children or provider use context this API is not working perfectly. Let's check API slash access state import dot meta dot env dot white API URL is equal over 401 status
and local storage dot remove item if window not window dot location dot path name starts with slash login window dot location href slash login return promise dot reject error API. Try to use this again. Ronnie Pandit Ronnie @gmail.com Ronnie R12345 registration failed. Could not fast refresh use auth info export is incompatible for थोड़ा एआई से हेल्प लेके देखते हैं क्या होता है. An account with this email already exists means हमारा रजिस्ट्रेशन हो रहा है. ओ बट ये रेंडर नहीं कर रहा है हमें कहीं पे. MongoDB डेटाबेस चेक करेंगे यहाँ पे. क्लस्टर्स में जाएंगे. ब्राउज ब्राउज करेक्शन ब्राउज करेंगे कलेक्शन को. यहाँ पे हमारी टेबल्स क्रिएट होंगी. यूजर्स में चेक करेंगे. ओ हमारे यूजर्स ऐड हो रहे हैं परफेक्टली. ओ देयर इज नथिंग रॉन्ग. Just it is not rendering us onto the dashboard again. Let's check registration page.
navigate slash dashboard catch error. क्लियर कर सी करेंगे कल्ट प्लस सी सी एल एस npm रन डेव करेंगे अगेन। लॉगिन का ऑप्शन आएगा, हम लॉगिन करके देखेंगे। roni@gmail.com से ऐसे करते हैं, अरुण से करेंगे, arun@gmail.com। arun@gmail.com। अरुण का पासवर्ड क्या है? ए धवन। ओके, तो हम डैशबोर्ड में रेंडर हो चुके हैं, बट हमें डैशबोर्ड में कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है इस डैशबोर्ड में। हम्म डैशबोर्ड इज नॉट वर्किंग। इसको हम बाद में देखेंगे अब नेक्स्ट लाइव में, कि डैशबोर्ड हमारे क्यों काम नहीं कर रहा है। लॉगिन रजिस्ट्रेशन परफेक्टली हमारा वर्क करने लगा है अब, है ना। तो फ्रेंड्स ऐसा करेंगे, अभी हम डिसकंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं कब? ऐसा करते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे कल दोपहर में, करते हैं 12 बजे के लगभग, at 12 p.m. Done. So thanks for watching. Please like, share and subscribe. If this video is helpful for you, we will meet tomorrow. Okay.